So please confirm, is the screen visible to you? Yes, sir. Oh, it's visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Fine, fine, fine. All right. So we will start from basic definition of field, though I'm sure all of you must aware with it. So an algebraic structure together with two binary operations. One we call addition, another we call multiplication, is said to be a field if number one, f under addition, it's an abelian group. Number two, f star. F star means the set of all, because in the first point we are saying f is an abelian group, right? So because it's a abelian group, so there is a additive identity. So f star means the f set minus the additive identity is an abelian group where f star is f set minus 0. 0 we are calling the additive identity. 0, the additive identity. The first one, this we call addition operation, this we call multiplication operation. So accordingly, additive identity means identity in this group, first one. So by 0 we mean additive identity, and by 1, so f star in the second point, so it is the basically the set of all non-zero elements of f. So remember, I mean 0 we are calling 0, but it's not an integer 0. I hope it is understood to all of you, right? It's not an integer, it's simply identity under this addition operation. And this addition, it is, we are calling this as an addition, otherwise it is not your usual addition of numbers, right? So it's an operation which satisfy all those 5 properties to make it abelian group. Similarly, this dot, it's a multiplication operation which satisfy all those 5 properties of abelian group. So this is number 1, f plus is an abelian group. Number 2, f set minus additive identity, it is also an abelian group under dot. And finally the number 3, dot distributes over addition. Is that fine? So any algebraic structure together with these two operations is called a field if we have these 3 things, right? So because in the second point we are saying that f star under dot is an abelian group, so naturally there is a multiplicative identity as well. So let's say by 1 we mean multiplicative identity. So this is the convention we will retain throughout the course.
So by 1, we always mean multiplicative identity of the field under consideration. All right. So now the point is 1 plus 1, because 1 in F, so 1 plus 1, this will also be in F. So this we denoted by 2 of 1. So 2 times 1 basically. Actually मैं dot लगा दूंगा. I want to avoid this dot because dot stands for the multiplication operation in F, right? So that's why I am avoiding dot. So for a time being ऐसा करता हूँ कि स्टार लगा देता हूँ इसकी जगह. 2 star 1 means 2 times 1. ठीक है. So this star means it's not 2 multiply 1. It simply means 1 plus 1. Similarly, 1 plus 1 plus 1 means 3 star 1. 3 times 1. And so on. So that means 1 plus 1 plus 1, n copies, let's say. So this we mean n star 1. N star 1 means n times 1. So because addition is closed in F, so all these elements will be in F. Okay? All these elements will be in F. So characteristic of a field F denoted by CH of F is defined to be the smallest positive integer n such that n times 1 is 0. So n times 1 is 0 because we are working in a field. So 0 stands for additive identity, 1 stands for multiplicative identity. So n times 1 is 0 means n star 1 is 0. Okay. So got the definition? And in case no such n exists, because there is no point of assuming कि ऐसा कोई n exist करेगा ही हमेशा, right? In case no such n exists, then CH of F is defined to be 0. Okay. So it's an easy exercise. You can do it easily. Basically, so let's say
F be a field. So throughout the course, we are assuming F is a field. F always capital F stands for field. So M star 1 dot stands for the multiplication we have. N star 1. This element is same as M N star 1. Is that fine? This is for any natural number M and N. You know this? कर लोगे? Yes. Yes, sir. Simply Yes, direct sir. जो फील्ड की डेफिनेशन है ऑपरेशन बिकॉज यू नो के basically M star 1 dot then 1 plus 1 plus 1, this is n times. So and then you can distribute multiplication distributes over addition. So this is M star 1 plus M star 1 plus M star 1, and then you can replace M star 1 by 1 plus 1 plus 1 M times. So eventually you will get Mn copies of 1, right? And similarly, if you which is equal to the right hand side. So that comes trivially. But I suggest you to write a proof explicitly, right? So this is all the exercise you are supposed to done. और in case अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो you can ask me in the next lecture. Okay, so this is fine. M star 1 dot n star 1, this is mn star 1, and this point is this immediately gives me the conclusion that the characteristic of a field is either 0 or a prime number. This implies characteristic of a field is either 0 or a prime number. So the point is it cannot be a composite number. Can you conclude this immediately from this previous exercise? Yes or no? Yes or because suppose characteristic of f is, suppose it's a some composite number है तो m dot n और m greater than 1 n greater than 1. So this would mean m n star 1, this is 0 because it is the characteristic, and this is same as m star 1 dot n star 1. So now you know product of two element because this dot is the product in field, multiplication in field. So this gives you that product of two element is 0 in field, right? So this means either m star 1 is 0 or n star 1 is 0. As f is any field is a domain. Is that fine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So
The point is characteristic of a field is uh, in case non-zero, it is always a prime number. All right. Now, let's say you have any subset S be any subset of a field F, where F is a field. So, what we mean by subfield of F generated by S? Subfield of F generated by S, it is the intersection of all subfields of F containing S. So, and you consider any arbitrary intersection of subfields, it will always be again a subfield, right? You can check. Basically, I can leave as an exercise to you. So basically, one more point let me write. So naturally, because it is the intersection of all subfields of F, so it is the intersection है, तो smallest one होगा ही होगा. It is the smallest subfield of F containing S. Smallest in what sense? Smallest in the sense that if there is any subfield L containing S, then L has to contain the subfield generated by S as well. तो जहां कहीं भी S है वहां उसके अंदर S से generated field भी जाएगा. In that sense, the subfield generated by S is smallest, right? So I can leave this as an exercise to check that intersection of arbitrary or any number of wheels. Actually, any number मैं लिखूंगा तो ये it sounds कि ये finite हो जाएगा, right? So it's better. Arbitrary intersection. It is again doesn't sound well. So ऐसा करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली लिख देते हैं. For any family of subfields maybe what you call k lambda, lambda and delta. Delta is an index set, finite, infinite, countable, uncountable, doesn't matter, arbitrary index set. So for any family of subfields k lambda of F, intersection k lambda, lambda and delta is again a subfield of F. So because it is this statement
Because of this makes sense. The intersection of all subfields of F containing S, because जो intersection है वो वापस field मिल रहा है आपको, subfield मिल रहा है, right? So that we call as the subfield of F generated by S. तो जैसे आपने ग्रुप में पढ़ा होगा, ग्रुप में क्या पढ़ा था? Yes, can anyone? कि you have a group, let's say G. You have an arbitrary subset X of G. Then what you mean by subgroup generated by X? Yes? Anyone? ये तो पढ़ के If the पढ़ा होगा subset, आपने. बोलो. if the subset is group itself, it is called subgroup. नहीं, सब वो तो पर्टिकुलर केस हो गया कि वो सबसेट है, ग्रुप है तो वो तो बात खत्म हो गई, वो खाली सबसेट है, राइट? तो देन व्हाट you mean by the subgroup of G generated by X? So cyclic group. हाँ? Cyclic group. नो नो नो, दैट मीन्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं है वो. तो सब ग्रुप भी ऐसे ही करके डिफाइन करते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स कंटेनिंग दैट सेट. ठीक है, बेसिकली आपने शायद ऐसे नहीं पढ़ा होगा, आपने ऐसे पढ़ा होगा. यू हैव अ ग्रुप जी, you have a set X, any set. Now, by this notation we mean the, अगर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय X, और सब फील्ड की में बात कर रहे हैं तो सब फील्ड जनरेटेड बाय X. So this notation stands for this. So it is the subgroup generated by X. तो ये आपने शायद ऐसे करके पढ़ा होगा कि x1 सम i1, x2 and so on, xn in, और ये जो i1 i2 in है, these are integers. तो जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. Yes, sir. और x1 x2 xn कहाँ से आ रहे हैं? x से. तो इसको भी अगर चेक करने जाओगे, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ G कंटेनिंग X. ठीक है, इस सेट को चेक करने जाओगे. हाँ, यस, Yes, sir. ओके. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, डिफाइन ऐसा करते हैं किसी, अब आई मीन जो यहाँ पे फील्ड की बात कर रहे हैं तो फील्ड, अदरवाइज ग्रुप की बात कर रहे हो तो ग्रुप, द सब ग्रुप जनरेटेड बाय गिवन सेट. तो डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स कंटेनिंग दैट सेट. एंड ये जो आता है ये बाद में, ये जो एक्सप्रेशन है ये उसका कैरेक्टराइजेशन है कि उस इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स दिखेंगे कैसे. वो एलिमेंट्स बेसिकली ऐसे ही दिखेंगे. ठीक है, अदरवाइज दिस इज नॉट द डेफिनेशन. आई मीन ये जो एक्सप्रेशन है, डेफिनेशन यही है करेक्ट, कि intersection of all the groups containing this set X is called the subgroup of G generated by X. All right. So now you know what do you mean by subfield of F generated by S. Okay. One more definition. The subfield of F generated by 1, the multiplicative identity of F, is called the prime subfield of F. So the point is, you know, I mean, अगर कोई सब फील्ड है F का, तो 1 उसके अंदर है,
भाई फील्ड है तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होना ही पड़ेगा। Yes, sir. तो सब फील्ड ऑफ एफ जनरेटेड बाय वन, अगर मैं डेफिनेशन लगाऊंगा तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब फील्ड ऑफ एफ कंटेनिंग वन, बट वन सबके अंदर है। तो कंटेनिंग वन वाला जो ये जो लास्ट का जो पोर्शन है कंटेनिंग वन, इसको मैं हटा सकता हूँ बिकॉज आई नो वन तो सबके अंदर है ही। So that means subfield generated by one is the intersection of all the subfields of F. Is that fine? Yes, sir. So it is the intersection of all the subfields of F. तो जब इंटरसेक्शन सारे सबफील्ड्स का हो गया तो नेचुरली इट विल बी द स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ एफ, राइट? सो क्लियरली it is the smallest subfield of F. तो स्मॉलेस्ट से क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट मींस के अगर कोई फील्ड है एफ, सब फील्ड है एफ का, तो उसके अंदर प्राइम सब फील्ड होगा ही होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट मींस इट इज कंटेन्ड इन एवरी अदर सब फील्ड ऑफ एफ, इन दैट सेंस इट इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन। ऑल राइट, नाउ आई एम interested in determining this prime subfield. ठीक है, I want to find this prime subfield. So this next theorem address this query. So in your book it is 7.1.1 prescribed book. Okay, so every field F has a least subfield P. So ये जो P है, जो स्मॉलेस्ट सबफील्ड है, उसको P से डिनोट कर रहे हैं, राइट? सबफील्ड P, इसको बोल रहे हैं द प्राइम सबफील्ड ऑफ F. Which is contained in every subfield of F. So up to here, no big deal. We have already seen, we have already realized that because every field has a least subfield. What is that? The intersection of all the subfields or the subfield generated by one. This we call as the prime subfield. The interesting part is the other one also. Either characteristic zero. So characteristic, as we have seen, क्या तो field है तो characteristic या तो zero है, otherwise prime number है. तो either characteristic is zero, and in this case, अगर characteristic zero है तो prime subfield will be isomorphic to Q. और characteristic prime number है,
a prime number, and in this case जब ये prime number p है तो p, the prime subfield will be isomorphic to z mod pz. इसका हम लोग we will denote this by z subscript p. So by writing z subscript p, we means this z mod pz. So ये first thing z mod pz तो पढ़ के आ रहे होगे आप लोग, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ring of integers modulo p, which you know it's a field, right? तो अगर कैरेक्टरिस्टिक p है तो जो प्राइम सब फील्ड है दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू zp, और कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 है तो p विल बी आइसोमॉर्फिक टू q. तो यहां से एक बात तो निकल के आई जाती है क्लियरली कि Q do not have any proper subfield. Is that fine? क्योंकि अगर आपका फील्ड है सपोज Q, कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो जो प्राइम सब फील्ड है वो आइसोमॉर्फिक है Q के, राइट? प्राइम सब फील्ड आइसोमॉर्फिक है Q के, तो दैट मीन्स के प्राइम सब फील्ड स्मॉलेस्ट फील्ड होता है, तो Q के पास कोई और फील्ड होगा भी नहीं. ठीक है? Yes, sir. So let's see the proof of this. So the first part is quite obvious. We have already seen, right? This we have already observed. You can write the argument yourself. एक दो लाइन का आर्ग्यूमेंट आप खुद ही लिख सकते हो इसके लिए. So, I am interested in this part. Characteristic is 0, then P is isomorphic to Q, and characteristic is P, then P is isomorphic to ZP. So I'll write the proof of the remaining portion only. ठीक है? जो शुरुआत का है उसको आप लिख लेना. I am leaving to you. All right. So what you do, define a map. A ring home. So map define करता हूँ. Ring home आप लोग चेक करोगे. Let's call it theta. Theta from the ring of integers z to the given field f. कैसे? Theta of 1 means the integer 1. ये जाता है 1 the multiplicative identity of f. ठीक है? तो for any positive integer m, theta of m, this is theta of 1 of z plus 1 of z plus 1 of z, m copies. And because I want this theta to preserve addition, so this should be theta of 1z plus so on, theta of 1z and this should be 1 plus 1 plus 1. So this is m star 1, m times 1. ठीक है? This is when m is positive integer. अब m अगर नेगेटिव इंटीजर है तो
इसमें माइनस और ऐड कर देंगे. When m is a negative integer, then let's call n is minus m is a positive integer. ठीक है. अब ये n अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए मुझे पता है ये डेफिनेशन थीटा की, तो थीटा ऑफ n विल बी n star 1 n minus m star 1, which is same as the minus of m star 1, or I mean what you call, I mean it's same thing, m times, sorry, n is minus m, that's fine, so minus m star 1, that's fine, minus m times 1, that is times 1. So that's how the theta is defined. Any query? Any query so far? No, sir. No, sir. So the point is कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है तो आप उसको m is any integer, doesn't matter positive or negative. So m is any integer, then m is same as m times 1, m time m dot 1, m dot 1 इस इंटीजर को थीटा मैप करेगा m स्टार 1 पे. ठीक है. So theta is a ring homomorphism क्योंकि we defined so that it preserves addition. ठीक है. So then theta is a ring home. You can check. It's an exercise to you that this map preserves addition, preserves multiplication. All right. So now come back to the field F. So assume characteristic is 0 first. All right. So when characteristic is 0, can you tell me what will be the kernel of theta then? Yes. Kernel theta. When characteristic is 0, I am interested in this kernel of this map. और मैप आपको पता है क्या है. So basically ये जो मैप है ये क्या हो गया? Finally the outcome is theta of anything what you want to call R. It is simply R star 1. यही मैप निकल के आया ना? Singleton 0. Singleton 0, because characteristic is 0. When characteristic of f is 0, kernel theta will be 0 only. ठीक है. So Yes, sir. in this case, theta induces
a map थीटा बार. थीटा बार कहां से कहां है? Q, the rational field. Rational field, you know, it is the quotient field of Z to F, given by so theta bar of basically any rational number m by n. It will be, because it is induced by theta, so theta m, it should be in terms of theta. Theta n element kahan hai? One thing, n is a non-zero integer, right? Because m by n is a rational number, so that means n is non-zero. N is non-zero integer, so theta n cannot be zero, because you said that characteristic zero है, तो कर्नेल थीटा जीरो है. कर्नेल थीटा जीरो है, दैट मीन जीरो इज द ओनली एलिमेंट विच कैन गो टू जीरो. तो जीरो इज द ओनली एलिमेंट विच कैन गो टू जीरो, तो थीटा एन तो जीरो नहीं है. जीरो नहीं है तो नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ही होगा, राइट? सो दैट्स हाउ थीटा बार इज डिफाइंड फॉर ऑल m by n in Q. ठीक. And now, because the point is this m by n is not the only representation for this rational number, you know, because m by n is same as 2m by 2n. Similarly, it is same as 3m by 3n. बट ये जो थीटा बार का डेफिनेशन है इस रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज क्वाइट नेचुरल टू वेरीफाई दैट दिस मैप इज वेल डिफाइंड. So there is a need to prove well-definedness. So suppose you have two rational numbers which are same, let's say m by n, m1 by n1. These are rational numbers, be such that they are same. This would mean m n1, this is same as n m1. अब ये दोनों तो इंटीजर्स हैं दोनों तरफ, तो यू कैन अप्लाई थीटा. थीटा तो जेड से एफ पर था, तो थीटा m n1, theta n m1, and theta is a ring home, so it preserves multiplication, so it is theta n dot is the field multiplication theta m1. Left hand side is theta m dot theta n1, and theta n1 is not zero, theta m1 is not theta n is not zero, theta n1 is not zero, so you can apply their multiplicative, and they are non-zero elements in field, so you can apply their multiplicative inverse to conclude that theta m, theta n, its multiplicative inverse, this is same as theta m1, theta n1, its multiplicative inverse. The left hand side is the image of m by n under theta bar. Right hand side is the image of m1 by n1 under theta bar. So it's well defined map, right? It's field homomorphism, you can do it easily. I'm leaving to you. Actually, we are defining theta bar in terms of theta, which preserves addition multiplication. So it is theta bar 2 is a field. So remember, I mean, homomorphism. Is that fine? If you wish, you can verify.
All right. So, I mean, it's a non-zero field home. That's fine. Theta bar. Is this all right? Yes, sir. तो नॉन जीरो है, you know, every non-zero field homomorphism is always 1 1. You know this? नहीं. Yes. Yes, sir. Every non-zero field home is 1 1. बेसिकली क्या होगा, आपके पास कोई मैप है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, तो कर्नल विल बी एन आइडियल ऑफ एफ, राइट? तो एवरी नॉन जीरो रिंग होम फ्रॉम ए फील्ड इज 1 1. तो बेसिकली क्या है, कर्नल ऑफ दिस रिंग होम विल बी एन आइडियल ऑफ एफ. आइडियल है इसके पास, बट फील्ड है, तो फील्ड के पास तो दो ही आइडियल होते हैं, एक जीरो और एक द होल रिंग. तो मैप है नॉन जीरो, तो कर्नल एफ कैनॉट बी इक्वल टू एफ, कैनॉट बी इक्वल टू एफ, इट मस्ट बी जीरो ओनली. दैट मीन्स एफ इज 1 1. तो ये थीटा बार नॉन जीरो फील्ड होमोमॉर्फिज्म है, तो इट्स 1 1, राइट? 1 1 है, तो for a 1 1 map, domain is always isomorphic to its image, right? So that means image of theta bar isomorphic to Q, the rational field. ठीक है? Now come back to our problem of prime subfield. What if I show that this P is equals to image theta bar? Then done. P था हमारा prime subfield, which is the intersection of all subfields of F. So my claim is P equals to image theta bar. Once I do this, done. तो वन वे इंक्लूजन तो डायरेक्टली आ जाता है, इज इट नॉट? बिकॉज P है स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ F और इमेज थीटा बार इज one subfield of F. So clearly P is contained in image theta bar, and this is by definition of P. ठीक है? तो रिवर्स इंक्लूजन ही देखना है आपको. So for the reverse inclusion, you start with any element in image theta bar. अब अगर ये इमेज थीटा बार में है, so that means it will look like theta bar of some rational number, let's say m by n, for some m by n in Q. This by definition theta m, theta n, its multiplicative inverse. Theta m you also know. Theta m is m star 1 dot n star 1, its multiplicative inverse. Is that fine?
सो द Yes, sir. पॉइंट इज कि पी था प्राइम सब फील्ड, तो पी के अंदर 1 है, पी तो फिर सब फील्ड जनरेटेड बाय 1 ही है, तो पी के अंदर तो 1 है ही, राइट Yes. राइट। अब 1 है तो उसके अंदर m टाइम्स 1 भी है, उसके sir. अंदर n टाइम्स 1 भी है, Yes, sir. उसके अंदर n Yes, टाइम्स sir. 1 Yes, sir. इस फील्ड है इटसेल्फ, तो उसके अंदर n टाइम्स 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, तो उसके अंदर इन दोनों एलिमेंट का m टाइम्स 1 और n टाइम्स 1 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट भी है, तो ये p के अंदर जाएगा ही जाएगा। इज दैट फाइन? Yes, sir. So you have the reverse inclusion. So thus image theta bar is nothing but P. So when the characteristic is 0, we have seen the P, the prime subfield, is same as the image of theta bar. Image of theta bar is isomorphic to Q. We have already seen. So that settles the first case. Now assume characteristic of f is P and it is a prime number. So can you tell me in this case what will be the kernel theta? Recall theta हमने define किया था शुरू में, ये था theta. This one. LZ. Theta, no, it's pz. Yes, sir. PZ. Kernel theta will be pz. It's pz. You know first fundamental theorem of ring home? First fundamental theorem of ring home बोलता है कि image of ring home is isomorphic to ring modulo the kernel of that map. Yes. हाँ बोलो. Yes, sir. Okay. So by first fundamental theorem, image theta bar is isomorphic to Z mod PZ. So again, enough to show that this P is kernel image theta bar. So this is again my claim is P equals image theta bar. So by definition of P, P will be contained in image theta bar. This is by definition of P. And for the reverse inclusion, if X belongs to image theta bar, then X will be theta bar of what? अच्छा, थोड़ा सा गैप रह गया बीच में, थोड़ा सा गैप रह गया यहाँ पे. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से यहाँ पर सर दोबारा थीटा बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से आ जाता है ना, इसलिए नहीं करना पड़ेगा. जेड से एफ पर मैप है थीटा, ठीक है. जेड से जेड मॉड पीजेड पर मैप है प्रोजेक्शन मैप पाई, नेचुरल प्रोजेक्शन. पाई. अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम आपको बोलता है कि
theta induces a unique map from Z mod PZ to F. तो वो क्या है? वो थीटा बार ही है वो। ये जो थीटा बार है ये आ रहा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज थीटा बार इन द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में? ये मैप कैसे आता था? इसको डिफाइन कोई कर सकता है क्या? So theta bar of any element, let's say n plus pz, what it is? ये तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से आता था ना? Simply theta of n. Theta of n. Is that fine? Are you aware with the first fundamental theorem of Ringholm or not? Yes? Yes. Fine. So फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ये जो मैप आता था वो यही होता था, यू कैन चेक। ठीक है, जो मैप जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में आता था वो यही मैप होता था। यू हैव अ रिंग, Ringholm F, Ringholm, and then R mod kernel F. This is projection map pi. तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बोलता था देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मैप फ्रॉम R mod kernel F टू इमेज F। यही तो होता था। तो इमेज F किसके अंदर है? इमेज F S के अंदर है। यहां से यहां पे आइसोमॉर्फिज्म मिलता था, उसको हम लोग F बार बोलते थे। तो इमेज F तो कंटेंट है S में, तो मैप आपको मिल गया आर मॉड कर्नेल एफ से एस के अंदर। तो वो मैप है क्या? ये एफ बार मैप क्या है? एफ बार एनी एलिमेंट ए प्लस कर्नेल एफ, इट गोज टू एफ ऑफ ए। यही मैप होता था वहां पे। ठीक है, इज दैट फाइन? तो ये हो जाएगा एक्स विल बी थीटा बार ऑफ एन प्लस पी जेड, which is same as theta n, which is same as n star 1. This will be in P. So you have the reverse inclusion. ठीक है, so this completes the proof. अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और if you have any doubt right now, you can feel free to ask anything from today's lecture. सर जब हमने क्यू को लिया था तो उस टाइम थीटा बार क्यों डिफाइन किया फिर? उसमें डायरेक्ट वहां नहीं पे ले सकते। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम नहीं लगी ना, कर्नल जीरो हो गया था। तो कर्नल जीरो हो गया तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लग नहीं रही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लग रही है, तो इसलिए थीटा बार तो यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ओनली थिंग इज के वो ये थीटा बार फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं। इज दैट ओके फाइन? सर। थीटा बार तो यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केस 2 में थीटा बार नहीं डिफाइन कर रहे, यहाँ भी कर रहे हैं डिफाइन। लेकिन वो लिखने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं है बिकॉज दैट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। इज दैट फाइन? यस सर। Anything from today's lecture, feel free to ask. Okay, so I'm leaving now. We'll meet tomorrow, and it is highly advisable. Please go through the complete lecture once again. And in case of any doubt, please ask me in the beginning of tomorrow's lecture. Okay. First, tomorrow, I will first take all your doubts, if there is any, from today's lecture, and then we'll start something new. Okay, so I'm leaving now. We'll meet tomorrow at same time. सर क्लासरूम में ऐड कर दीजिए मुझे। हाँ, मैं अभी करूँगा। एक्चुअली 10-15 दिन इंटरव्यू चल रहा है, तो आई एम नॉट, मैं अभी देख नहीं पाऊंगा। बट हाँ, मैं कर दूंगा, वीकेंड में कर दूंगा। ठीक है सर।